So before we proceed, obviously we couldn't have a class yesterday because of production issues I was facing. But yeah, I'm hoping everyone got enough time to go through profiles, permission set, everything there. Yes, sir. Right, everyone is clear, hopefully then. Yes, sir. Okay, great. That's good. That's extremely good. Fine. Now let's begin today. Let me share my screen. हेलो कुणाल सर। Yes. सर मेरा एक डाउट था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो डिफरेंट यूजर बना के दो यूजर्स को दो डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के दे दी। ठीक है, मैंने Right. एडमिन से एप्लीकेशन बनाया, उसमें टैब्स बनाए और Right. प्रोफाइल में जाके वो ऑब्जेक्ट्स को परमिशन दे दिया मैंने एक यूजर को। तो वो उस दूसरे जब यूजर से लॉग इन करा तो आई कुड सी द टैब्स। ठीक है, Okay. देयर वर टू टू ऑब्जेक्ट्स जिसके बीच में मैंने लुकअप और मास्टर डिटेल रिलेशन लगा रखा था। ठीक है, बट जब मैंने दूसरे यूजर प्रोफाइल से लॉगिन करके उसको ओपन करा तो आई कुड सी द रिकॉर्ड्स। बट जब मैं वो होता है ना, एक फील्ड आता है जैसे मास्टर डिटेल फील्ड आता है, वहां पे वो लेंस वाला मार्क होता है, देन व्हेन वी क्लिक इट सो वी आर एबल टू उसको उसके साथ रिलेट कर पाते हैं हम। Right. तो उसमें मेरे को वो यूजर्स वो रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे थे सर। बट जब मैं स्पेशली उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके मैं देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट मेरे को रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को डिटेल साइड के अंदर जब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इट वाज नॉट गिविंग मी एन ऑप्शन, इट वाज गिविंग मी एन ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। Right. Okay. Yeah. So no worries. So this is actually what we are planning to cover today only. So anyway, once let's go through today's class. After that, if your query is not resolved, then we can discuss on why you're facing that, right? I'll give detailed explanation. No worries. So this is एंड something which is we are planning to study today. So the first, there are basically two things which will be studying today. One is something which is called OWD, which is or white default, right? And the other is something called sharing rules, right? So uh, not just sharing rules, but basically the sharing principles in Salesforce, right? So within that, we will study sharing rules. We will also study roles. Okay. So let's begin for today. So the first thing, obviously, we want is OWT is happening. Ah, fine. Right. My screen is visible, right? Yeah, sure. Right. Okay. 1 sec. I have this. Was this running? Right. So basically, if you remember previously what I told you that ideally an admin should be able to see everything, right? By everything we mean all objects, all fields, all records, right? Now, but there is something which is called access by ownership, right? What does that mean? That means if there is some record I am processing, let's say I am the one who has created it, I'm the one who am modifying it, I'm the one who is accountable for that. So in Salesforce वो हम कैसे maintain करते हैं? वो हम maintain करते हैं using this field which is the owner. Who is the owner of that record, right? Now standard क्या होता है? जिस यूजर ने record create किया, he will be the owner, right? Now, if I want, okay, I don't want to work on this record anymore. What I'll do is I'll change the owner, change it to, let's say, sales user. So then the owner will become uh, accountable for this record. This record is now his responsibility. He will be the one working on this record, right? Is this principle clear? यस
Right. Yes, sir. Now, in this case, so data is something which, if needed, should be confidential, which means unless required, you should not have access to that record. Right. That means other than the owner, by default, should others be able to see these records? Should that be my minimum that, okay, anyone can see any record? Is that an acceptable solution? No, Does sir. that protect data? No, right? So in that case, what we should want is by default, access should be restricted. If needed, we can grant more access, right? This is the approach for the data design now. Now we are not going with object design. This is on the data design, like who is accessing this, the sharing model design. This is how we will build on this. This is the principle is restrict access first, and then as per need, you can give access wherever required, right? Now for this, the first step is the organization wide defaults, right? So if in setup you go to sharing settings, you will see here the organization wide default. What does that mean? This is a setting which you configure on an object level. Okay, so for every object, you can set a default value which will be applicable throughout this whole Salesforce org. That means if for this opportunity in the org wide default, I make a setting within this org, that is the baseline. This is the part where we restrict access. Okay, now what are the options that we have? Let me edit this and let's go to account. On account, the options are private, public read only, and public read write. This is the internal access. External access means outside of Salesforce, if someone querying, do I let them update this record? Okay. So this is the internal access. This is the external access. In most cases, this will be private only. We don't want Salesforce data to be outside Salesforce, right? So this will be private. You will see some unique values here. We will go through this once we go through these records. For first, let's go with account. For external access, private, public read only, public read write. And same for here, private, public read only, public read write. What does this mean? If for an object, the default is private, that will mean unless explicitly you provide access to a record, only the owner can see that record. Okay. If I set this opportunities internal access to private, that means all these records that you see here, right? For all of these, I am the owner, right? And other than me, if someone else logs into Salesforce, goes to this all opportunities, he would not be able to see these records because all records of account opportunities are by default private. If I modify for account, that same thing will happen. Only the owner will see the record. Now, public read only, which means I can see, I can edit, others go to all account, they can all see these accounts, but they cannot modify anything. They won't have access to edit. Okay, so that is the public read only. And public read write means what? Anyone can see a record, anyone can modify a record. That means basically if you put public read write, it means there is no data restriction. All records are visible to everyone. Am I clear? Yes, ये sir. तीनों वैल्यू की डिफरेंस आप लोगों को समझ आया सबको?
प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली एंड पब्लिक रीड राइट का? यस राइट. नाउ व्हाट शुड बी यूज केसेस इनके लिए? Sir, can you please repeat one more time? We don't know. Yeah, sure. Okay. So basically, because of based on these permissions, मेरा organization का जो default access level है वो set हो रहा है. इसीलिए if I make the default access level as private, that will mean only the owner will be able to see the record. Others will not be even be able to see the record. Okay, that is the private. Public read only means I can see the record, I can modify the records. If someone else comes to all accounts, they will also be able to see the record, but they won't be able to edit or modify this record. Okay. Then public read write means anyone can go to any record and modify the record. They can see the record, they can modify the record. These are the three values. Now, you will see here, there is a fourth value, but it is not visible for all the objects. Okay. This one is not visible for all the objects. The value which is controlled by parent. Right. What is controlled by parent? This is only applicable for objects who have a parent object. They have a master detail relationship with a parent object. What does that mean? I'll give you an example. अगर मैं इस contact पे जाता हूँ, right, and I see here, what are the opportunities here? Right. So all of these opportunities are child records of this account, right? Okay, let's take cases. Okay, let's take a real life example. Suppose database में let's take कोई भी एक shopping का वो ले लेते हैं. Let's take Amazon, right? Amazon के database में आपका एक account है, right? And आप जब कंप्लेंट करते हो कोई कुछ भी इशू के लिए, तो आपके नाम पे एक वो कंप्लेंट आईडी, केस या टिकट रेज होता है, ये सुनो. Yes. Right. Now, Yes, sir. if someone does not have access to your data, can they solve your case? No. They have to have data. Right. The next thing, if they can't even see your details, आपका अकाउंट पे जाके आपका फोन नंबर नहीं देख सकते, आपको कॉल नहीं कर सकते, आपका पास्ट डिटेल्स नहीं देख सकते, राइट, पेमेंट मोड वगैरह नहीं देख सकते, कैन दे सॉल्व योर केस? No. Should they have access to a child record case? आपका अकाउंट ही इस सिस्टम, अगर सपोज कोई इस रोल में है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आपको जो डिलीवरी देने आता है, राइट, ही आल्सो लॉग्स इनटू सेल्सफोर्स, the app, right? Let's say a salesperson also logs into the app. Now, he does not have access to your account. Should he have access to आपने क्या क्या ऑर्डर किए थे, past orders? They should not, right? Only people who have access to your account should also be able to see all the related objects to that account, at least the child objects, right? So that same, just to handle that same scenario, on all the child objects, we have another option which is called controlled by parent, which means अगर किसी को इस अकाउंट का ही एक्सेस नहीं है, तो इस अकाउंट के अंदर जो कॉन्टैक्ट है, they should also not be able to see this, right? So that is the fourth option, which is called the controlled by parent. These are the four options which are the common applications across the org-wide settings. There is one other option, but that I would say is specifically only linked to Marketing Cloud, which is for the campaign. Okay, campaign के लिए you have a
by another options, which is called public full access and either controlled by campaign, right? So these, unless you are working, these you should not change, because else marketing cloud का basic functionality ही issue हो जाता है. But either here campaign member के अंदर it's not just see controlled by member or controlled by campaign, right? So just दो relationships हैं, उनके साथ tagging के लिए there are unique values here. But for all other objects inside Salesforce, you will have these three, which are the standard, which you have to configure. Now my question to you is, what is the recommendation unless you have any additional requirement? What is the Private most only. secure one? Right, private. That would mean I don't want data to be visible outside of requirement. So I'll keep it as private. Now, a private तो हमने कर दिया, right? But the other thing is, let's take, I have access to 5 accounts and I manage all of the orders for them, right? My teammate has access to 5 more accounts. He manages orders for them. Should my manager be able to see all those 10 records, or should he not be able to see those records? He should be accessible to that. Right. My manager should be able to see what I have, what his team is working on, what I am working on, right? So that is this checkbox that you see, which is grant access using hierarchies. What does that mean? Based on hierarchy, access will be provided. Okay, that would means if I am working with an account, I have a manager, then my manager can also work with that account. Okay. Now, this is for object level I have done, right? If you see here, for all the objects, it is applicable here, right? Access using hierarchy, private, public, private, public. We had created a custom object also. Where is it? Employee. Okay, it's not alphabetic. Employee, right? So employee again, we have parent controlled by parent. Right. Now, org-wide defaults के लिए, then the requirement is always try to keep access minimum if needed. There are only few specific cases where you should be going for public read write. There are cases, but very few जहाँ पे public read write use होना चाहिए. In most cases, it is private and then उसके बाद expand करते हैं. If needed, public read only भी कर देते हैं. Right. Now, अब ये तो हमने कर दिया baseline. So let's say baseline के लिए I have kept everything as private. Now, as per my custom specification, I want by default account खाली मेरे employee individual owner को दिखेगा और manager को दिखेगा. That is all. But I have created one team whose purpose is to audit all the accounts, right? So they are not either the owner, neither they are the manager. But I want नहीं उनको record दिखना चाहिए. Now there are two ways. Either I make this public read only, तो उनको दिखेगा. But the issue with making it public read only is, मेरा teammate can see what negotiations I am having with an account or how much money I am getting from that account. Right? So public read only does not mean कि खाली audit team को ही दिखेगा. Public read only मतलब सबको दिख जाएगा. So that is why we end up with a situation जहाँ पे हमको चाहिए नहीं शेयर करना है, but एक criteria बना लेते हैं, उसके basis पे हम share करें. Okay. So that is what the sharing rules let you do. So how does it work? Let's go to what do we have here?
Let's take something which is, let's go with lead or account. Let's go with account. तो हम account के लिए चलो sharing rule बनाते हैं. Now within sharing rule, what you can do based on criteria आपको share करना है. So share accounts. Just normal, I'll keep a name. There, within this, there are two things you can do. First is आप किसका record share करना चाहते हो, and second scenario is आप किस type का record share करना चाहते हो. What does this mean? Let's say my requirement is कि audit team को sales team के accounts देखने हैं, right? So that means I'll share the records based on who is owner. Now, how this will help me? Audit team has to see sales team's records, but legal team has to see finance team's record. Now, what does that mean? कि ऑब्जेक्ट या फील्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं है. इट इज जस्ट आई एम चेकिंग, अच्छा इस रिकॉर्ड का ओनर अगर ये है तो इसका रिकॉर्ड इसको भी दिखाओ. राइट, दिस इज द सिनेरियो कि कोई स्पेसिफिक ओनर है जिसका रिकॉर्ड्स मेरे को शेयर करना है, कि सेल्स टीम के रिकॉर्ड सबको शेयर होने चाहिए. So that is when we go based on record owner. Now within that, I have the options whose records to show. Right. I can select कौन से रोल के होंगे, कौन से पब्लिक ग्रुप्स के होंगे, कौन से इंटरनल subordinates के होंगे. Okay, let me do one thing before I create this. Let's cover roles first. That I think will help you guys. Right, roles. So within users, right, within users we have roles. जहाँ पे हमारा profile user वगैरह सब कुछ है, वहीं पे हमारा roles भी है. Now if you see here, what is basically role? एक company के लिए this is a sample role hierarchy. Do you guys agree or not? Yes. Right? Yes, sir. एक product company है, right? इसके अंदर रहेगा कुछ भी हो, right? CEO के अंदर डायरेक्टर के अंदर रैप, ऐसा टाइप का रहेगा. राइट, लेट्स मेक अ स्मॉलर एग्जांपल. वीपी के अंदर नेटवर्किंग का वो रहेगा. दीज आर सैंपल एरिया. द ओनली थिंग इज यहाँ पे इट प्रोवाइड्स यू 3 टेम्पलेट्स. टेरिटरी बेस्ड सैंपल जब आपका एरिया वाइज वो है, जैसे सपोज बैंक्स में जैसा होता है, राइट, ब्रांच हेड, रीजन हेड ऐसे हो गया, राइट, उसके ऊपर वाला पोस्ट है तो इसलिए एरिया वाइज हेड है. सिमिलरली जस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे हेड है, जैसे सपोज हार्डवेयर का एक अलग टीम है, सॉफ्टवेयर का अलग टीम है, नेटवर्किंग का अलग टीम है, तो उस टाइप का अगर आपको हायरार्की बनाना है. सो दीज आर ऑल जस्ट सैंपल्स, बट irrespective of whatever template you make, it gives you this kind of a hierarchy. CEO, CFO, right? अभी इनके अंदर आप देखो SAP के अंदर कस्टमर सपोर्ट है, इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस है, राइट, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, राइट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. सो ऑल ऑफ दिस वेज आप रोल बना सकते हो. नाउ व्हाट डज दैट मीन? नॉर्मली रोल के केसेस में जो हमारा वो ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की था, राइट, द ऑप्शन व्हिच वी हैड, दैट ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की, व्हिच वुड मीन वीपी नॉर्थ अमेरिकन सेल्स के जितने रिकॉर्ड्स हैं, द सीनियर वीपी ऑफ सेल्स मार्केटिंग कैन सी ऑल दोस रिकॉर्ड्स, राइट. Because senior vice president can see all those records, that would mean CEO can also see all those records, right? Can SVP of customer service view the records of VP international sales? No. No, sir. No. Why? Because he does not fall under this hierarchy. Now, if I had made, see, for standard objects, वो वाला checkbox is disabled. It is always selected true. You can't uncheck it. Custom के लिए आप जब कर सकते हो, so then if you uncheck it, what will happen? ये VP के records इसको नहीं दिखेंगे, इसके records इसको भी नहीं दिखेंगे. Ultimately क्या होगा? Records जो है, right? Normally records पे काम कौन करता है? कोई staff करेगा, mid level staff करेगा, senior level staff करेगा, right?
But CEO by himself will not work on records, will he? No. No, right? So that would mean अगर मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे लेट्स से मैंने कर दिया कि ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की को फॉल्स कर दिया, so then CEO will not even be able to see the employees because he is not the owner. He did not get access. No one shared records with him, so he won't be able to see the list of employees. So that is why in most cases grant access using hierarchy is enabled true. There are, I don't think I can think of what can I think of? I can recall one scenario, but that was more like when they were working with confidential customers where they did not want. Yeah, that was, yes. So one example I remember. So what happens is that was for a you have banks, right? And then you have NBFC, non-banking financial firms, like all these hedge funds, mutual funds, ये जो companies वगैरह होती है, right? So in those cases, what they have is to prevent any kind of insider trading or all those details, right? A manager just sees sum of data that, okay, my junior made stock sale of, let's say, 5 lakhs this week. Okay, he made transactions of 15 lakhs this week, right? But for whom he bought, how much he bought, what he sold, right? The manager cannot see. Because if someone gets to know कि अच्छा ये वाला stock ये बेचने वाला है, maybe its price will fall down, right? So then I'll buy this. राइट फॉर हेज फंड्स, बिकॉज कोई हेज फंड है, लेट्स से कोई बड़ा म्यूचुअल फंड अगर किसी एक कंपनी के सारे स्टॉक बेच देता है तो उस स्टॉक का प्राइस कम होगा. देन वी डोंट वांट अदर्स preemptively seeing it and selling records. So in that case, that is one project I remember I had worked on wherein access was restricted to individual level. यहाँ पे पेरेंट इनको खाली रिपोर्ट्स का स्क्रीनशॉट दिखता था, डैशबोर्ड मेल में भेजते हैं हम रिपोर्ट्स, राइट? देयर इज अ वे that only we used to do, and that to report चलता था not with his context, क्योंकि इसको तो एक्सेस है नहीं, तो सिस्टम एडमिन रिपोर्ट चला के उसका स्क्रीनशॉट भेजता था. So there is a very limited scenario where you wouldn't want access based on this role hierarchy, but normally based on hierarchy access ऊपर तक जाता है, right? Now let's go back to sharing settings. Now okay, let's take this example. So what we just saw is कि सेल्स की जो टीम है, वीपी नॉर्थ अमेरिकन जो सेल्स की टीम है, कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका को उसके रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे, राइट? बिकॉज ऑफ हायरार्की, वो उसकी हायरार्की में नहीं है तो उसको वो नहीं दिखेगा. बट इन अ लॉजिकल केस, राइट, नॉर्थ अमेरिका की कस्टमर सर्विस टीम ही तो नॉर्थ अमेरिका की सेल्स को हेल्प करने जाएंगे, राइट? यस और नो? यस. राइट. आपका अगर अभी फोन खराब होता है, लेट्स से यू हैव सम सैमसंग फोन, राइट, व्हिच वाज सोल्ड इन हियर, सो यू सबमिट अ कंप्लेंट टू द सैमसंग कस्टमर सेंटर हियर, राइट? अब अगर उनको सिस्टम में यहाँ बिके हुए फोन्स का ही एक्सेस ना हो तो क्या वो सर्विस बुकिंग लेंगे? नहीं लेंगे. सो नाउ वी कम अप विद अ सिचुएशन जहां पे देखो हायरार्की के बाहर है तो एक्सेस तो मिला नहीं, तो अब कैसे एक्सेस दें उसको अकाउंट का? So that is when you come to sharing rules कि आप custom criteria दो, and this is what based on record owner. record owner के basis पे हम इस type के rules बनाते हैं जहां पे we select a role, right? Let's take VP North American Sales, and इसके records किसको दिखने चाहिए? To where is the customer support team? North America, customer support North America, इसको दिखने चाहिए. Now does this make sense कि record type के basis पे हम क्यों share करेंगे? क्या ये समझ आया? लिटिल बिट. Right. Yes, sir. Great. Fine. Now, Sorry, sir. Sorry to interrupt you. I just wanted to know that within this can be within users or only within a queue.
No, ये role, this role I can give to 15 people. So Okay, for okay, all got it, got it. 15 people, So this role will be basically, assigned to so, thousands of users. So thousands of users can see this, right? okay. So जिस यूजर को ये असाइन होगा उसमें हो जाएगा. क्यू अगर हमने बनाया है उस क्यू में जो मेंबर है उन सबका एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? So this is this. Now the issue with this is right now still this is not correct. Why? अभी तक हमने ये जो किया है कि नॉर्थ अमेरिकन सेल्स के वीपी के नाम पे जो रिकॉर्ड है वो खाली कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका को दिखेंगे, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट, क्योंकि वीपी खुद थोड़ी ना सेल्स करने जा रहा है. वीपी के अंडर जो लोग हैं दे आर द वंस हु विल बी द एक्चुअल ओनर ऑफ द रिकॉर्ड, राइट? सो इन दिस केस यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन सेल्स के वीपी के नाम पे कुछ रिकॉर्ड नहीं है. दिस दे डोंट ओन, account owners are never VP. Account owners are what? The sales team, right? So that is why I will have to select roles and internal subordinates. Okay, which means नॉर्थ अमेरिकन सेल्स का जो वाइस प्रेसिडेंट है और उसके अंदर जितने सेल्स टीम के लोग हैं वो जो अकाउंट ओन करते हैं वो सारे अकाउंट कस्टमर सपोर्ट टीम को दिखने चाहिए, राइट? आई कांट जस्ट सिलेक्ट रोल्स हियर, I have to select roles and internal subordinates. So that is the difference between roles and internal subordinates. Is that clear? Yeah, sir, got it. सर वो जो आप हेज फंड्स वाला बता रहे थे कि उसके इमीडिएट जो मैनेजर्स हैं उनको विजिबल नहीं होगा, वो Right. कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सर इसमें अभी? मतलब जस्ट ब्रीफ. हाँ, तो उनको रिकॉर्ड्स तो हम दिखाएंगे नहीं. वहां पे आपका रिकॉर्ड्स org wide default will be private, right? Grant access using hierarchy will also be false. Sharing तो देना ही नहीं है वहां पे. That was an example I was giving जहां पे access using hierarchy will also need to be unchecked. Okay. इन मोस्ट राइट. केसेस आपका मैनेजर आपका प्रोजेक्ट देखेगा, आपका कोड देखेगा, आपका क्लास देखेगा, राइट? मार्केटिंग हेड जूनियर मार्केटिंग टीम के सेल्स के आइटम्स देखेगा, राइट? सो इन मोस्ट केसेस बॉस सीज व्हाट द जूनियर इज वर्किंग ऑन, राइट? आई वांटेड राइट. टू गिव एन एग्जांपल ऑफ वेयर बॉस शुड नॉट सी व्हाट जूनियर इज वर्किंग ऑन. राइट. ओके, एग्जैक्ट एटलीस्ट ऑल द डिटेल्स, राइट? राइट. And sir, what if Right. that role hierarchy check mark जो होता है वो जो अनचेक होगा तो ये ओवरराइड करता है या based on that it work? Yeah, so okay. So the relation with this is OWD is the minimum. ठीक Okay, है? okay. OW जो डी जो आपने किया है वो तो होगा ही. अब उसके बाद सपोज बाय OWD किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे Right. आके मैंने एक शेयरिंग रूल ऐड कर दिया. सो ओवर दैट ओनली दिस विल बी एप्लीकेबल. दैट विल मीन अगर मेरा अपॉर्चुनिटी इज प्राइवेट, सो अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर इज प्राइवेट, अकाउंट इज एवरीवेयर प्राइवेट एक्सेप्ट नॉर्थ अमेरिकन सेल्स के वीपी के रिकॉर्ड्स कस्टमर सपोर्ट को दिखेंगे. Got ओके, it. नाउ with this also it is not just कि भाई the records दिख जाएंगे and they can just do everything. No, you have to specify that also कि अगर अकाउंट मैं इनको दिखा रहा हूं कस्टमर सपोर्ट के, so what is the expectation? Should they be only able to see the accounts or should they also be able to modify the accounts? Right? Should they be able to see the records or modify the accounts? So in this case देखो sales से account का details are finalized, so they are just seeing the records for information. So I'll keep this as read only. Right? Now सारा सेटिंग तो मैं अकाउंट के लिए कर रहा हूं, बट यहाँ पे अचानक से यू विल सी अपॉर्चुनिटी एंड केस आल्सो वर विजिबल. व्हाई? बिकॉज दीज आर चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स टू अकाउंट. Do I want to give them access? Do I not want to give them access? Let's say कस्टमर सपोर्ट को प्रोसेस करने के लिए तो अपॉर्चुनिटी भी देखना ही पड़ेगा. सो आई वांट अपॉर्चुनिटी आल्सो रीड ओनली. केस देखने की इनको जरूरत है? डू यू थिंक? नो सर. Case is what the customer support team will work on, right?
तो केस तो उनको रीड राइट होना चाहिए। एडिट कर, हाँ अपडेट करना चाहिए। केस इज व्हाट? केस इज नथिंग, अ कंप्लेंट ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, राइट? लोगों को जब कंप्लेंट आती है तो वो कंप्लेंट आप केस में रेज करते हो, तो कस्टमर सपोर्ट केस पे ही तो काम करेगा, राइट? सो केस इज व्हाट दे विल हैव रीड राइट, not account, not opportunity. Okay. ओके सर। टिकट रेज होगी केस ही पर सर। हाँ, इसका टिकट रेज होगा केस पर, राइट? आई मीन ऑन द केस। okay. See, what is case? What is a case in Salesforce? I don't have case. Okay, there is a case. Right. If you see case, what is there? What is this example? इस अकाउंट ने एक केस रेज किया है जहां पे वो बोल रहे हैं क्या कि मेरा सब्जेक्ट ये है कि मेरा मेंटेनेंस गाइडलाइंस फॉर दिस जनरेटर आर अनक्लियर, राइट? दिस इज अ कंप्लेंट दे हैव रेज्ड। Okay, see, design issue with mechanical rotors, right? So what is this? This is someone, this account, इस अकाउंट के इस कांटेक्ट ने एक कंप्लेंट रेज किया है कि भाई मैंने जो आपसे मोटर लिया था उसमें डिजाइन का इशू है। सो केस इज नथिंग बट आप जो कंप्लेंट रेज करते हो, राइट? टिकट रेज करते हो, कंप्लेंट रेज करते हो, कहीं पे भी आप कुछ रेज करते हो, बोलते हो ना टिकट आईडी ये आया है, आपका कंप्लेंट आईडी ये रेज हुआ है, दिस इज व्हाट ना केस इज दैट इन सेल्सफोर्स। सर्विस क्लाउड का जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है, जो कस्टमर सर्विस आपको देता है, राइट? सो दैट होल सर्विस क्लाउड is dependent, the primary object of service cloud is case. Okay, so customer support will work with what? Case. इसलिए केस का I have to give read write. अकाउंट का डेटा देख केस सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल बोला एग्जैक्टली? अकाउंट आपका कुछ ऑर्डर में कुछ इशू हुआ है तो उसको देखने के लिए आपका अकाउंट का डिटेल्स उनको दिखना चाहिए, राइट? आपका ऑर्डर का डिटेल्स दिखना चाहिए, लेकिन टिकट को जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे क्या वो रेजोल्यूशन देके टिकट को क्लोज कर पाएंगे? नो। So case ka I will give read access, read write access, right? Now this is, now here we did based on record owner. Now let's change it to based on criteria. Now if you see here, this below part is exactly same as based on record owner. The only thing that changes, select which records to be shared. Previously when we were selecting which records to be shared, हमारा criteria था कि किसके owned records हमको share करने हैं. Here now it becomes कौन से records share करने हैं. That will means I can add any kind of criteria here. Let me say I want कि shipping country is equals to India, right? And I want, let's say, type is not equal to, let's pick any value, prospect. तो ये केसेस में शेयर कर दूंगा टू कस्टमर सपोर्ट, राइट? सो क्राइटेरिया में आप स्पेसिफिक फील्ड लेवल डेटा दे सकते हैं कि इस फील्ड में ये वैल्यू है तो ये शेयर करो, राइट? सो द क्वेश्चन इज एज आई मेंशन, कौन सा रिकॉर्ड शेयर करना है और योर मॉडल इज बेस्ड ऑन किसका रिकॉर्ड शेयर करना है, राइट? अगर किसका रिकॉर्ड शेयर करना है इज द क्वेश्चन, यू विल गो विथ रिकॉर्ड ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल। और अगर कौन से रिकॉर्ड शेयर करने हैं देन यू विल बी गोइंग ऑन क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग। इज दिस क्लियर? क्या सर? I did not save it. I should have saved it. No worries. Now, okay. Let me just name it something. Rule 1 should be fine. Record owner, I'll go roles and internal subordinates. And
I wanted to share whose VP North American sales to where is this customer support North America? Read only, read write. Save. Now, whenever you create a sharing rule, what does it say? It says the recalculation of sharing access will continue in the background. What does this mean? Currently, मेरे org में already accounts हैं, which are not shared, right? तो अगर मैंने कोई शेयरिंग रूल बना दिया तो उसके बाद क्या होता है, अब मैं कोई नया अकाउंट बनाऊंगा फॉर नॉर्थ अमेरिका तो वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा टू कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका आफ्टर आई हैव क्रिएटेड द शेयरिंग रूल्स. बट जो पुराने रिकॉर्ड जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो तो शेयर नहीं हुए ना अभी तक, राइट? इफ आई क्रिएट द रूल टुडे, so all the accounts created before the rule has been created, will they be shared? Yeah. Will they be shared? अपने आप से तो शेयर होंगे नहीं, आपने ना रिकॉर्ड मॉडिफाई किया ना अपडेट किया, तो अपने आप तो वो शेयर होगा नहीं. सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर अ शेयरिंग रूल इज क्रिएटेड और इवन व्हेन अ शेयरिंग रूल इज मॉडिफाइड, आप जब मॉडिफाई करते हो शेयरिंग रूल, लेट्स से अभी मैं ये शेयर कर रहा हूं टू द कस्टमर सपोर्ट, राइट? लेट्स से आई कम हियर एंड चेंज इट टू a different customer support international मैंने कर दिया सपोज. नाउ इन दैट केस एज पर माय लॉजिक क्या होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका को रूल्स अकाउंट्स दिखने बंद हो जाने चाहिए कि नहीं हो जाने चाहिए? मैंने अगर शेयरिंग रूल मॉडिफाई कर दिया, लेट्स से आई मॉडिफाई दिस शेयरिंग रूल and change this from customer support North America to customer support international, then what should happen? जो All data will be shared. उसको दिखेगा. राइट, पहले वालों को दिखना बंद हो जाना चाहिए और नए वालों को दिखना शुरू हो जाना चाहिए, राइट? Yes. So what does that mean? That means Salesforce has to create some kind of mapping to make sure only those जिनको as per the updated rule access है होना चाहिए उन्हीं को दिखे, राइट? एंड अगर किसी को पुराने उससे एक्सेस था वो एक्सेस हट जाए. So that is what is shown here, which is the recalculation of sharing access. Now, why it shows that this will continue in background, you will receive an email notification update. This is because अभी तो यहाँ पे 10 अकाउंट है, राइट? 13 अकाउंट है, मिली सेकेंड्स में अपडेट हो जाएगा. लेकिन लेट्स से फॉर माय ओन प्रोफेशनल org, right? In that org, as of now, last count I saw, we have 130 million accounts. Right? So when I modify a sharing rule, I get back the email around 3.5 hours later कि सारे अकाउंट का एक्सेस अपडेट हो चुका है. So that is why it tells you it will run in the background. We will let you know once it completes. See right now, one or more sharing operations has been initiated, right? So which is the one which is initiated? Account sharing, and due to account modification, opportunity case sharing. तीनों चल रहा है. And done. Why? 13 ही रिकॉर्ड थे, 5 अकाउंट है, सॉरी 5 केसेस है, राइट? 22 अपॉर्चुनिटीज है, तो कहाँ टाइम लगेगा? माइक्रो सेकंड्स में हो गया. बट इफ दिस इज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, राइट, that many million accounts, each account has around 4-5 opportunities, has around 30-35 cases. So imagine how many records are there. तो हर एक का एक्सेस जगह रिकॉन्फ़िगर करने में सेल्सफोर्स को तो थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? वैसे भी मल्टी टेनेंटेड पे है, हर जगह आपका लिमिट्स लगा रखा है, कोड में लिमिट्स, एसक्यूएल में लिमिट्स, हर जगह लिमिट्स है, राइट? सो दैट इज व्हाई it runs in the background, it takes some time, and after that it gets updated और access फिर से reconfigure हो जाता है. Now these are the ways
using which you can control access in Salesforce. Base level will always be configured in the organization wide default. Now it is up to you, आपको public करना है, private करना है, whatever you do, but the base level is in the org wide defaults. उसके बाद additional जो भी आपको चाहिए वो आप करोगे sharing rules से, right? Is this clear, everyone? Yes. 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 Right. Now ये तो चलो हमने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन से, एक ओवरऑल पिक्चर देके हाई लेवल हमने कॉन्फ़िगर कर दी. व्हाट इफ आई वांट कि नहीं यार, एक यूजर को भी ऑप्शन होना चाहिए कि ऐसे ग्रुप ग्रुप में नहीं करना. लेट्स से वेरी सिंपल थिंग, मेरे को एक रिकॉर्ड मेरे टीममेट के साथ शेयर करना है, ओनली वन रिकॉर्ड, कि भाई ये वाला रिकॉर्ड देखिए इस अकाउंट में कुछ गड़बड़ है. ओनली वन अकाउंट आई हैव टू शेयर. सो दैट इज व्हाट, सो बेसिकली दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर. उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है विच इज मैनुअल शेयरिंग. राइट, मैनुअल शेयरिंग आपका क्या है? यू गो टू अ रिकॉर्ड, शेयर, राइट, शेयर टू सेल्स यूजर. क्या एक्सेस देना है? जस्ट वन यूजर. यू कैन टाइप हेयर ग्रुप रोल सबऑर्डिनेट, सेम थिंग, बट आप जस्ट एक रिकॉर्ड पे डायरेक्टली वहां से आप कर सकते हो शेयर. दिस इज ऑल समथिंग दैट कैन बी डन. दिस इज कॉल्ड मैनुअल शेयरिंग. दिस इज समथिंग व्हिच इज द लीस्ट यूज्ड, बट इट इज देयर इफ नीडेड. राइट, नॉर्मली आपका और पॉलिसी जो होगा उसके अकॉर्डिंग जो होगा आप कॉन्फ़िगरेशन में बिल्ड कर दोगे, बट इन केस चाहिए तो दिस मैनुअल शेयरिंग इज आल्सो एन ऑप्शन. So till now we learned three ways of sharing in Salesforce, which is, can anyone tell me what are the three ways we learned? OWD, manual sharing. No, OWD is not sharing. OWD is not a type of sharing. OWD is the minimum access level. Type of sharing हमने क्या क्या पढ़ा, किस टाइप से आप रिकॉर्ड शेयर कर सकते हो? Manual sharing. ग्रांट Manual एक्सेस sharing. हायरार्की के थ्रू. Okay, हायरार्की के I थ्रू heard manual मैनुअल sharing and शेयरिंग. hierarchy के through. And Sharing rule. right, these are the three. Right, and शेयरिंग this is रूल्स an interview पर question. एक यूजर को नहीं करने का ऑप्शन देते, जैसे वहां पे पब्लिक ग्रुप और रोल नहीं, सबऑर्डिनेट शेयरिंग दे रूल रहा था. एडमिन कॉन्फ़िगर करता है, बिकॉज शेयरिंग रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट. शेयरिंग रूल में मैंने जब किया था तो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल अकाउंट्स. राइट, राइट मैनुअल राइट. शेयरिंग में कोई पट आप कर रहे हो. ओके, एक इंडिविजुअल यहाँ पे रिकॉर्ड जब को. हाँ जस्ट अगर मैं इस अकाउंट को किसी के साथ शेयर करता हूँ, डज नॉट मीन ऑल द अकाउंट्स ओन्ड बाय मी विल बी शेयर टू हिम. ओनली दिस अकाउंट विल बी विजिबल. राइट. Now, these are the three types of sharing you have in Salesforce. For beginner interviews, 1 year, 2 year, even I see 3 year interview, experience interview तक कभी कभार पूछ लेते हैं कि sharing को related questions will be there in interview. Right, you guys have to be prepared for this. And the one thing, there is one other thing which I would say is not even recommended and least used, is another type of sharing, which is called apex sharing. So what does that mean? कॉन्फ़िग से तो ये सब आपने टाइप का शेयर कर लिया, राइट, बट व्हाट इफ आपका पूरा फ्लो ही कोड में चल रहा है बैक एंड में, कि ये आया, ये अपडेट हुआ, उसके बाद नए रिकॉर्ड बना दिए. अब ये नए रिकॉर्ड बना के किसको शेयर करने हैं बेस्ड ऑन सम कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो कोड में ही आपको चाहिए. राइट, व्हाई, व्हाट विल हैपन इज, सी, ओनर के बेसिस पे मैं जब भी कर रहा हूं, राइट, व्हाट आई एम डूइंग, कि इस अकाउंट का अगर ये ओनर है, राइट, और व्हाट इफ आई वांट कि फील्ड भी मेरे को चेक करना है साथ में, कि अकाउंट का ओनर इज नॉर्थ अमेरिकन सेल्स टीम एंड टाइप इज प्रोस्पेक्ट. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर मैं क्राइटेरिया से करता हूं तो मेरे को अकाउंट से ओनर आईडी का फील्ड मिल जाएगा, बट क्या उसको रोल मिलेगा? सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि क्या सिनेरियो है? राइट, लेट्स से
इन दिस केस आई एम असाइनिंग कि ठीक है, सेल्स, वीपी सेल्स या उसके अंडर जितने लोग हैं, राइट, उनका अगर अकाउंट है तो वो इसको शेयर कर दो. देयर वाज अनदर सिनेरियो आई शोड कि अगर अकाउंट का टाइप इज नॉट प्रोस्पेक्ट तो वो इनको शेयर कर दो, राइट. व्हाट इफ आई वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स? सर वो जो उसके नीचे कंडीशंस आ रही थी ना, तो उसमें एंड ऑपरेटर लगा के वो मल्टीपल कंडीशंस भी आ रहा था ना क्राइटेरिया में. राइट, मल्टीपल कंडीशंस के अंदर लेट मी टेल यू दिस, राइट. ओके, लेट्स गो हियर, लेट्स गो टू क्राइटेरिया, राइट. नाउ हियर इफ यू सी, अकाउंट ओनर जो है मेरे पास, उसका रिकॉर्ड आईडी है, राइट. बट अकाउंट ओनर का रोल क्या है, क्या मुझे पता है? कैन आई गेट इट नो. हियर? राइट. एंड इवन इफ देयर वाज अ वे टू गेट हिज रोल हियर, कैन आई गेट हियर कि वो रोल वीपी सेल्स के अंदर पड़ता है कि नहीं? नो सर. राइट. सो इफ माय सिनेरियो इज कि नहीं भाई, वीपी सेल्स या उसके अंडर के रोल्स के पड़े और टाइप भी प्रोस्पेक्ट हो, तब क्या करेंगे हम? फॉर दैट द लास्ट कोर्स, जब और किसी कॉन्फ़िगरेशन से आप शेयरिंग नहीं कॉन्फ़िगर कर पा रहे, दैट इज व्हेन यू गो फॉर एपेक्स शेयरिंग. Now apex sharing ka details we will not go through today, because that is something we will go after we have gone through what is apex, right. Apex एक बार हम सीख लें, उसके बाद apex से कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं, that we will cover. But just I wanted to bring this up so you know that there is not just 3 types of sharing, there are 4 ways to give sharing. Sharing rules, using hierarchy, manual sharing and apex sharing. ओके, कि आप कोड से भी रिकॉर्ड शेयर कर सकते हो. एंड जब कोड से आप रिकॉर्ड शेयर करना हम जब सीखेंगे, तो मैंने आपको भी क्या बताया, ये रूल चलाने के बाद ये टाइम लगता है. क्यों टाइम लगता है? डिपेंडिंग अपॉन Background द process. अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स. Background राइट, process. डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड इट हैज टू रीमैप एक्सेस. किसी का एक्सेस हटाना है, किसी को एक्सेस देना है, राइट. दिस इज व्हाट सेल्सफोर्स डज. तो वो जो मैपिंग यहाँ पे स्टोर होता है, राइट, कि मतलब इस यूजर को इस अकाउंट का एक्सेस है, इस यूजर को इस अकाउंट का एक्सेस है, राइट. So that is somewhere stored in Salesforce. उसी से तो Salesforce को पता चल रहा है, right? With Apex sharing, what we do, हम डायरेक्टली वो मैपिंग ही बनाते हैं या डिलीट करते हैं. ओके, यूजर का आईडी दिया, अकाउंट का आईडी दिया, मैपिंग ही बना दिया कि इस यूजर को इस रिकॉर्ड का एक्सेस है. ओके, सो दैट होल थिंग जो Salesforce बैकएंड में चलाता है, एज पर अवर नीड हम वही सेम लॉजिक कोड में हम भी लिख सकते हैं, कि मैपिंग हम ही चेंज कर देंगे कोड में, कि बनाओ रिकॉर्ड बनाओ, मैपिंग के भी रिकॉर्ड ही बन रहे हैं, तो बनाओ तुम इस अकाउंट को इस यूजर को इस यूजर को इस यूजर को शेयर करो, फिर अगले अकाउंट को ये 5 यूजर को शेयर करो, अगले अकाउंट को ये 16 यूजर को शेयर करो, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन एपेक्स, which is the apex sharing. For that, once we work a little bit with apex, right, you guys get some comfortability with apex, उसके बाद हम उसको कवर करेंगे. But for now, just remember 4 types of sharing are there which are applicable. Sharing rules, using hierarchies, role hierarchies, manual sharing, and apex sharing. Okay. Anyone, any queries, any question? सर एक डाउट है. हाँ. सर जैसे आप मेरे सीनियर हो, मैं जूनियर हूँ, ये हायरार्की में. Right. हाँ. और मेरे जो रिकॉर्ड बनाया उसका OWD प्राइवेट हो गया. Right. Okay, so technically you should not be able to see it, but just because you are my senior, you will be in a position to see it. Right. Does your profile, for example, some ABC profile is given to you and DEF is given to me. Right. So if your profile does not even have the read access to the Okay. वो ऑब्जेक्ट जिसमें बना रहा हूँ, तो आपको वो दिखेगा No. और आप चेंज कर पाओगे? No. Okay. See, sharing when we are considering this is for records. Okay.
सो व्हाट डज दैट मीन? सेल्स टीम को इसके रिकॉर्ड नहीं देंगे, उसके नहीं देखेंगे। द एजम्पशन इज अकाउंट सबको दिख रहा है, अभी अपना अपना अकाउंट सबको दिख रहा है, राइट? ये सब ऑल दिस लॉजिक इज फॉर दूसरे का अकाउंट दिख रहा है कि नहीं, राइट? तो अकाउंट दिखने का परमिशन इज गिवन। ओके Okay, so record permission when we are modifying this is only applicable for when object permissions are same. Okay, अगर let's take this one, let's see controlled by parent मैंने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, right? But अगर उसको opportunity object का ही access नहीं है, तो ये तो record दिखने के लिए है. What I told you, right? What does that mean? अगर मेरा account is private, that means he will go to this account, he will go to all accounts, but उसको accounts ही नहीं दिखेंगे, right? So that means Right. object permission is already there. Record पे restriction आ रहा है. Object Right. permission ही नहीं है, फिर तो record का restriction का बात ही नहीं है. और एक और एग्जांपल सर, जैसे फॉर एग्जांपल OWD हो गया, पब्लिक रीड राइट, Right. so everybody should be able to write also, edit also. For any object जिसके लिए public read write कर रखा है OWD, for that object the sharing rules are useless. ओके, बट मेरा एक और क्वेश्चन सर, मतलब क्वेश्चन कुछ और था, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ किसी इंसान को प्रोफाइल लेवल पे एडिट का एक्सेस नहीं है, तो ही विल नॉट बी एबल टू डू इट इवन दो OWD. Yes. Profile is no. See again. आपको अगर किसी को प्रोफाइल पे एडिट का एक्सेस ही नहीं है, तो वो तो अपने रिकॉर्ड भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, राइट? ही कैन ओनली सी रिकॉर्ड्स, right? So what will happen in that case? Okay, let me give this, I'll give you a scenario for this one, right? Let's say profile का मेरा है, उसको प्रोफाइल लेवल पे रीड एक्सेस है, राइट? बट मैंने OWD कर रखा है पब्लिक रीड राइट फॉर अपॉर्चुनिटी, राइट? सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, प्रोफाइल परमिशंस के बेसिस पे उसके पास वो एडिट का एक्शन ही नहीं दिखेगा, राइट? So if I have made public read write, how it will work is, मेरा प्रोफाइल है एडमिनिस्ट्रेटर, तुम्हारा प्रोफाइल है सेल्स, किसी का प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस, किसी का प्रोफाइल है सपोर्ट, राइट? As soon as I made public read write for all other three profiles, the base is public read write, right? अब उन तीनों प्रोफाइल में से किसी एक प्रोफाइल में अगर राइट पर एडिट परमिशन नहीं है तो उसको रीड दिखेगा, लेकिन बाकी दोनों प्रोफाइल्स के लिए तो वो एडिटेबल हो गया, राइट सर, राइट. राइट? सो दिस इज ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर एवरीवन. पब्लिक रीड राइट जब आप कर रहे हो, यू आर नॉट सेलेक्टिंग एनी प्रोफाइल, आपने सारे प्रोफाइल के लिए रीड राइट कर दिया. अब क्या होगा? अब बाकी 10 प्रोफाइल में से 3 प्रोफाइल को ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, उनको नहीं दिखेगा. जिन प्रोफाइल्स को ऑब्जेक्ट का एक्सेस है वो देख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन. ओके, इट्स लाइक यूज प्रोफाइल इज अ यूजर लेवल से आप रेस्ट्रिक्शन ला रहे हो, एंड दिस इज आप ऑब्जेक्ट लेवल से रेस्ट्रिक्शन ला रहे हो, राइट? रिकॉर्ड्स का, राइट? अगर ऑब्जेक्ट सॉरी प्रोफाइल पे आप ऑब्जेक्ट लेवल से रेस्ट्रिक्शन ला रहे हो, यहाँ पे आप डेटा लेवल से रेस्ट्रिक्शन ला रहे हो. अगर ऑब्जेक्ट पे ही एक्सेस नहीं है तो डेटा तो वैसे भी नहीं दिखेगा, राइट? जी सर. बट दिस इज लाइक ओके, ऑब्जेक्ट पे एक्सेस है क्योंकि वो अपने लिए कर सकता है, वो खुद 1000 अकाउंट बना सकता है, लेकिन ये दूसरों के अकाउंट क्या देख सकता है, क्या मॉडिफाई कर सकता है? दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग, राइट? सो दिस इज शेयरिंग, राइट सर. राइट? इफ यू सी हियर, these settings only specify the level of access your user have to each other's data. अपने लिए क्या डेटा बना सकते हैं, वो तो प्रोफाइल से वैसे भी उनके पास है, राइट? प्रोफाइल पे अगर उसके पास एडिट भी है बट यहाँ पे प्राइवेट कर रखा है, सो दैट व्हाट डज दैट मीन? वो एडिट कर सकता है अपने रिकॉर्ड्स, किसी और के रिकॉर्ड्स दिखेंगे भी नहीं उसको, राइट? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन. राइट सर. Basically, it's all about record level only, no? No, see, when this will work, for whom this will work, let's see. ऑब्जेक्ट लेवल कहां पे? कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल को भी केस का एक्सेस होना चाहिए, राइट? यस और नो? कस्टमर सपोर्ट अमेरिका को भी केस का एक्सेस होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट लेवल पे क्या एक्सेस रहेगा उनका? सेम, दोनों का सेम रहेगा, राइट?
Yes, sir. So here the criteria is then, okay, object का access तो same रहेगा, but do I want them to also access common records? Should, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर मैंने उसको एडिट दिया है, व्हाट डज दैट मीन? कोई कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल का स्टाफ कैन मॉडिफाई एनी केस, वो कोई भी केस क्लोज कर सकता है, बट शुड द इंटरनेशनल टीम बी क्लोजिंग अमेरिकन केसेस? Should the American team be closing international cases? No. No. Right. So that is what we are restricting. कि वो अपने केसेस तो कर ही सकता है, वो तो हमने परमिशन दे ही दिया है, दूसरे के साथ क्या कर सकता है? राइट? Yeah. Is this all clear? Yes. Queries, questions, anyone, any doubts? No doubts? No. Great. That's very good. Okay, I had put a longer time for this topic, but I'm glad you all got it cleared. I think that is good. So what we covered today, this is the whole sharing model of Salesforce, right? This is how data access is done, right? Other than these 4 ways, there is no way you control access. ठीक है? Object level पे आप profile से करते हो, user से करते हो, that all permission set से करते हो, we have already covered. The next step is record level आपको कैसे control करना है, that we have covered using the sharing rules, right? All this is done. So, okay, I think this is great. That is fine. So then, okay, what I'll do is, okay, yeah, as I had mentioned, right? So I was working on the document. So I have compiled a document for all of you guys. So it will be a summary of all the topics we have covered till now, right? Textual, key points, key definitions, terms to remember, right? And even interview questions, commonly asked interview questions for those topics I have compiled together. I'll be sharing those in the document. I'll probably share maybe tomorrow afternoon, maybe, right? Not sure if possible. I have some calls in the morning, but yeah, if possible, I'll share morning only, else I'll share by tomorrow afternoon. Other than that, for this sharing, right? So I have devised an exercise which will work with objects, profiles you will have to configure, and the sharing rules also you'll have to configure, right? All these sharing except Apex share, right? Org wide आपको configure करने ही करने. So I'll be sharing an exercise. I'll share that also in a separate document because it has some long requirement, right? तो एक document बना के मैं आपको share करूंगा. That is something I want you guys to complete, that whole thing. Okay, I'll share that to you tomorrow, and I'll check that next week Monday. So you have till that time to practice it, to attempt it, whatever you want. Because next week Monday, when we discuss that thing, that is when we will be going through the queries. Okay. आपको प्रोफाइल बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, परमिशन सेट बनाने हैं, सब कुछ बनाने हैं, तो वो बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्वेरी आ सकते हैं, डाउट आ सकते हैं. सो नेक्स्ट वीक मंडे वी विल बी डिस्कसिंग दोस. सो जस्ट अ ब्रीफ, this I'll probably share by tomorrow afternoon, hopefully. And I think then sharing is finished, and the next topic for us would have been the, yeah, fine, then tomorrow we can begin with automations. Okay, now by automations, the old ones which are getting deprecated, which are not recommended also now, workflows, process builders, those we will cover in this week, the days we have. And next week, Monday, from Monday, our focus will be flows. Everyone uses flows. Everyone recommends flows. If you build any other automation, people directly question you in code review. Flow से क्यों नहीं बनाया? Right? Am I clear? Anyone any doubts, queries? No, sir. Everyone good? Sir, one thing, sir. Sir, while we are making a master detail relationship and we are establishing a this master detail field over the detail side of the relationship.
So while we are doing it, there are two options that are given: some read only and read write something. Right. So what does that? What is that significance of that both two options, and what does they do? Yeah. So for this one, see what I wanted is मेरा for this specific case, right? जहाँ पे मेरा master detail था, तो account के साथ किनका master detail था? Case का था, opportunity का था, right? So what it was showing is, अब account का data I'm configuring it there, right? कि account का I'm making it as read only. Right. Now, so what does that mean? Ki even though, because see, the thing is, this is not his own records. That person may have edit permission on account. वो अपने अकाउंट मॉडिफाई कर सकता है, सब कुछ अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकता है, उसके बनाए जो लेट्स से 10-12 अकाउंट है, राइट? दिस इज अबाउट Right. कोई अकाउंट जिसका अकाउंट ओनर इज समवन एल्स, राइट? दैट Right. परमिशन इज जस्ट फॉर लेट्स से on object you have edit permission for account, I have edit permission for account, राइट? सो ऑब्जेक्ट लेवल पे तो एडिट है, तुम 10 अकाउंट बनाओ, मैं 10 अकाउंट बनाऊंगा, मैं अपना डिलीट करूंगा, तुम अपना डिलीट करो, दैट इज फाइन. यहाँ पे जो आप रीड ओनली कर रहे हो, व्हाट डज दैट मीन? इवन दो आई कैन एडिट माय ओन अकाउंट्स, कैन आई एडिट योर अकाउंट जिस अकाउंट पे ओनर पे आप हो? No, you should not be able to. राइट. सो दैट इज व्हाट कंट्रोल्ड बाय देयर. वहां पे अगर मैं रीड राइट करता हूँ, व्हाट डज दैट मीन? कि अगर मेरे पास अकाउंट पे एडिट परमिशन है, तो आई कैन इवन एडिट योर रिकॉर्ड्स. Okay. Okay. Okay, sir. If it is read only, I can edit my accounts, but I can only see your accounts. I cannot edit your accounts. That is also one sort of a security thing. Yes, that is what I told, right? Ki American customer support should not close international cases. उनको खाली Right. अपने Right. को Right. केस क्लोज करने का परमिशन होना चाहिए, राइट? सो अपने Right. केस तो यू कैन डू दैट, वो तो ऑब्जेक्ट से परमिशन आ चुका है. आप दूसरे के रिकॉर्ड्स के साथ क्या कर सकते हो, राइट? Right, sir. One last thing, sir. In the beginning of the class, the thing that I asked you, उसमें मेरे ख्याल से OWD का issue होगा. Right. And not just OWD, it is either getting restricted by parent, controlled by parent, right? Because junction के अंदर दो parent है, तो दोनों का combination से वो चल रहा है, right? Right. 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 Okay, so what does that mean? Junction object में क्योंकि दो parent हैं, so that means to get access to that record, you should have access to both objects. Both objects के records का edit permission होना चाहिए, from profile, from sharing. Right, sir. Understood. Okay, so सर वो इस that's what I बार told you in the beginning, right? Go through the thing, then automatically it will come. Sorry, I interrupted someone. Someone was saying something. एक्चुअली आई वांट टू टास्क ऑन स्कीमा बिल्डर के बारे में एक बार बता सकते हो तो सर? Schema, schema मैं देख builder. रहा था मैं देख रहा था वो, Uh, तो मुझे दिखा उसमें दिख रहे थे सब रिलेशनशिप. schema builder is. I personally don't recommend actually schema builder because see I'll tell you this. Right? Let's go to schema builder. Right. Hmm. फिर एक ऑप्शन भी दिख रहा था उसमें, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बाय स्कीमा बिल्डर करके. Right. Now, if you see here, right? Sorry, you mentioned something? ऑप्शन भी दिख रहा था मुझे, मैं भी कुछ आई मीन आई वाज फाइंडिंग समथिंग, तो एक ऑप्शन दिख रहा था Yeah, yeah. स्कीमा बिल्डर, I'll tell you something. बिल्ड Schema builder ऑब्जेक्ट विद आपको क्या करता है, right? Yeah. Ideally, schema builder can help you basically and modify an object. Okay, let's go to कहाँ है ये account? दिख रहा है क्या account? कहाँ है हम? सेकंड सेलेक्ट करने के बाद दिखाता है सर. ये रहा. Sorry. Right. नथिंग. So if you see here, what is this? This is just basically if I go here account, then let me also click case. Right. इसको हम पास में ले आते हैं. Let's say I selected two objects.
राइट, ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स किए. अब व्हाट डज इट लेट मी डू? केस पे हैं हम. पेज लेआउट आई कैन व्यू फ्रॉम हेयर, राइट. Object I can view from here. If I go to object, it goes back again to object manager के अंदर ही आपका खुल जाएगा case object. Okay, so you come back here to see the actual details of the object, right? But here you can see a brief summary of the object, and within this what you have is page layouts. Again it goes back to the object manager only, जहाँ पे आप case के page layouts को modify कर सकते हो. So basically for configuring the object and for configuring the layouts, you come back to object manager. Now what schema builder is actually useful for, which I still use for, is identifying relationships, right? अगर आपको path traversal कर रहा है, let's say someone has said, okay, you want to analyze, what this should be with. So for that, account पे आप गए, account से जाके आप, you can easily see, okay, what are the relations. इसका एक self relationship है with parent, right? And that is all. Case पे अगर मैं जाता हूँ, तो you can see case has relationship with account and also with parents. Similarly, let's go to opportunity, right? Opportunity has what? Account पे relationship है, और भी दूसरे यहाँ पे relationship है, contact वगैरह का भी है. So those also I can pull. Opportunity owner है, user है, right? Those also I can pull. Schema builder by itself, as of now, I would say is mostly obsolete, unless you want just use it to kind of understand the structure कि current जो objects हैं, क्या object है, एक summary of क्या क्या field है, right? And what are they related to. Other than that, like I myself, while working, have probably not opened schema builders in at least I would say 2-3 years, right? I think once I opened it just because someone had asked me, they wanted like a for what I had opened it. Yeah, we were generating a business requirement document for a new project, and so for that we had to work on initial structure of what the project will be like, right? What should be the object, what should be the structure. So for that we were working on this. पहले आपका यहीं से आप बना सकते थे, ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, यहीं से आप बनाते थे सब कुछ. When classic was there, right, you could go to here in schema builder, you go here, you can create an object from here, right? If you see here, and then कोई फील्ड आपको बनानी है इस पे, राइट? यू वांट अ चेक बॉक्स, यू ब्रिंग इट हियर, यू ड्रैग इट, यू पुट इट हियर, और फील्ड का नाम, लेबल वगैरह ये सब देके सेव करो. बट व्हाई यू शुड नॉट बी डूइंग विद दिस? बिकॉज यहाँ पे ये बना के सेव हो जाएगा. एक्सेस दिया क्या प्रोफाइल को? पेज लेआउट पे ऐड हुआ यहाँ से, right? All these are additional action. If you do with schema builder, then again ultimately you will have to come here and do those things. It is better to do it here, क्योंकि यहाँ पे आपको फील्ड बनाते वक्त एक गाइडेड पाथ में 4 स्टेप में आराम से कवर करा के पूरा एक बार में क्लोज हो जाएगा विदाउट नीडिंग टू ब्रेक इट डाउन, राइट? व्हाई यू कांट ऐड पेज लेआउट हियर? क्योंकि वो आपका उन्होंने रिडायरेक्ट कर दिया है. आप यू कम टू ऑब्जेक्ट मैनेजर. ऑब्जेक्ट मैनेजर आई वुड से for working with an object, always go with this. If you want to like study relations क्या है, कितने objects है मेरे इसमें, right? For that it is helpful. Like जब आप किसी नए project में जाते हो, मे बी इनिशियली जब कोई स्टोरी आपको आया कि अरे इस ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाई करो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट. अच्छा किस किस के साथ रिलेटेड है. स्कीमा बिल्डर पे आओ, राइट, गो टू दिस. जैसे सपोज मैंने किसी को दे दिया कि एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट पे जितने लुकअप्स हैं उनको आप अपडेट करो, ये नाम चेंज करने हैं आप. So what you will do? Okay, you will go here, you will select the object, case select किया. Now you will go, अच्छा ये fields हैं, it is related to itself, it is related to asset, उस पे एक lookup है, account पे एक lookup है. So that way you can track. But other than that, mostly schema builder is relevant. Some people still use it out of habit. I'll tell you, I have colleagues who still use it out of habit, because when we started, then we have worked with schema builder a lot, right? But then over time, like I personally migrated completely to object manager, but some people are still, I say, like drag and drop.
there are some people who also like with these new orgs, right? आपके जो नए org हैं, if you see here, right? So for developer org this is available. प्रोडक्शन ऑर्ग्स में देयर इज अ हाइपर फोर्स ऑर्ग, जो नया सेल्सफोर्स का एडिशन आ गया है, उसमें आप क्लासिक में स्विच भी नहीं कर सकते हो, क्लासिक बंद हो चुका है उसके लिए. सी दिस इज हाउ इट वाज प्रीवियसली, जब क्लासिक था सेल्सफोर्स का, राइट? यहां से आप ऐप पे जाते थे. लेट्स गो टू सेल्स ऐप इन क्लासिक. दिस इज द सेल्स ऐप इन यूआई, राइट? दिस इज द सेल्स ऐप इन क्लासिक. लेट्स गो टू अकाउंट. आपको जो पेज लेआउट को एडिट करने के बाद जो आपको फील्ड दिखता है, राइट, वैसे क्यों दिखता है? दैट इज द क्लासिक यूआई. क्लासिक में जैसे यूआई है, ये आपको पेज लेआउट में दिखता है. रिलेटेड लिस्ट ऐसे है, राइट? Right, so that is why schema builder, if you want, browse through it. I would say like an afterthought, but fine. As I showed, but I would not recommend you to create and modify objects with schema builder, because there is a high chance you may end up missing something, right? While we are in classic, one thing, record जब आप delete करते हो Salesforce में, right? So it is like your computer or laptop, or phone. Everything is not permanently deleted directly. Whenever it is deleted, it actually goes to recycle bin. जो recycle bin आपको classic में मिलेगा, right? Within this recycle bin, if you see, records are stored here for a fixed duration of time. Within that time, you can come, you can delete those records, or using this undelete operation, you can restore, right? So this is recycle bin is available in classic. Within this, there are two specific action. empty और recycle bin मतलब क्या है? वो ही आप permanently delete करोगे जो आपने delete किए हैं, राइट? एन एम्प्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसाइकल बिन क्या हो गया? लेट्स से आप लोगों ने 4-5 अकाउंट डिलीट किए, मैं यहाँ पे आया, मैंने एम्प्टी कर दिया ऑर्गेनाइजेशन रिसाइकल बिन, फिर आप बाद में आके रिस्टोर नहीं कर पाओगे, राइट? सो रिसाइकल बिन इज देयर. अनडिलीट ऑपरेशन is also here, so undelete will cover, that is more important in Apex, but fine. Normally if you see, when you delete, it's not always deleted. You have a way to recover it. There is a time limit within which you have 30 days, and after that it is permanently deleted. Okay, right? Is that clear? Yeah, sir. Sir, recycle bin also in Lightning also in name. हाँ, अभी आ गया है, बट पहले ये खाली क्लासिक में था. That was the only reason previously most people had to go to classic. अरे रिस्टोर करना है कुछ, right? तो सर ऑब्जेक्ट डिलीशन तो अभी भी क्लासिक में से ही करना पड़ता है ना, आई गेस. नहीं, ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ से लाइटनिंग से डिलीट कर सकते हो. क्यों क्लासिक से डिलीट करोगे आप? ऑब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन डिलीट. नहीं, डिलीट कर सकते हैं रिकवर रिस्टोर करने के लिए. अगर हम फील्ड डिलीट करते हैं देन आई गेस लाइटनिंग से हो जाता है. आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो क्लासिक से जाकर रिस्टोर करना पड़ता है आई गेस. आई जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन, सब डिलीट हो जाएगा. सारे रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, डेटा, टैब, लिस्ट व्यू, everything will be deleted. The only thing is if I restore, okay, see 15 days, right? The only thing is if I restore it, right, ऑब्जेक्ट तो आपका रिस्टोर हो जाएगा, राइट? जो ऑब्जेक्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो थी, जैसे फॉर्मूला फील्ड्स, वैलिडेशन रूल, ये सब आ जाएगा, लेकिन ये बाकी जो चीजें हैं ये नहीं आएंगी, राइट? जैसे ऑटोमेशन में जो वर्क फ्लो रूल और एक्शन मैंने बनाए हैं वो डिलीट हो गए, वो वापस नहीं आएंगे. ओके, ओके. राइट? ओके सर. जहां जहां पे लुकअप्स है वो डिलीट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट से. अब वापस ले आऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड वापस आ जाएगी, बट लेट्स से मेरा अकाउंट पे एक एम्प्लॉय का लुकअप था, वो फील्ड वापस नहीं आएगी क्योंकि दैट इज अकाउंट ऑब्जेक्ट, वहां जाके फिर से बनाना पड़ेगा, राइट? बट इट यू कैन डिलीट फ्रॉम लाइटनिंग, ऑब्जेक्ट आल्सो यू कैन डिलीट फ्रॉम लाइटनिंग. अभी तो धीरे धीरे दे आर माइग्रेटिंग. ये क्लासिक तो कब का डेप्रिकेट करना था, वो कर ही नहीं पा रहे बिकॉज पीपल आर नॉट लिविंग. ओके, पीपल आर नॉट लिविंग, which is why they are not able to.
Right? But you can modify. You can go here. You can just go here. You don't need to go to classic. Just go here. यहाँ पे you go delete. Fine. Great. I think we made very good progress today. We covered an important topic today, but tomorrow we'll be covering automation. So workflow rules, right? We'll start with workflow rules. We'll look at process builders, and then we'll move to flow. Flow will probably move to Monday, right? But yeah, let's see. Because flow, I don't want to give a gap. So let's see what will happen. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay, fine. That's great. Thank you, everyone. Please practice. I'll share more details,